Yes. So everyone, yesterday we did a quick revision of some points that you had asked for, like property concept we had revised. Okay. So for percentage we created a property. So public double, some other name we have to use. So it is case sensitive. So we are using capital P here. Get and set methods we need to define. And value keyword is used for setting the value. So everybody is okay with the property concept? So it's an alternative to getter setter. You can simply understand it like that. So in appearance, it will look like a public data member, but internally its behavior is like a getter and setter. That is the purpose of the property concept. Then we started off with creating another class called college class. Okay. And here we had a reference of all student. So we created this as a reference of an array. And after that, in the constructor, we are creating the array of references. ये सारे भी references हैं. So please remember, student object is not getting created in this scenario. Then we had another method called as set student. So what are we doing here? We are passing the index at which location we have to store the student, and we are passing the student object, student reference here. So this is the code we were discussing. Okay. So So this memory diagram is very, very important in understanding the overall concept. So what are we doing in this case? Let's see the main method also. कॉलेज का भी तक ऑब्जेक्ट नहीं बना है ना, ठीक है. Let's say we create the college object here, and let's say I pass the size as 5, and then student s1 is equal to new student. I think we have age, name is Amit, and percentage is there. So C1 dot set student S1. This is the code suppose we have written. So let's one by one understand the memory allocation part. So first of all, this line will get executed. So for C1, C1 is a reference. It will be created on the stack. Let's assume that its address is 100. It will go like this. Now here the memory allocation will be done for the college. So what all we have in the college? We have, I think so, size. So size we are passing as 5, and then all student is equal to new student. So here another memory block is being created. Let's take this address as 200, and here memory block for 5 student is created. So these are the references. Currently all of them are blank. So 0, 1, 2, 3, 4. After this you can see this one. अच्छा यहाँ पे हमने size भी pass किया है. So 3, S1 suppose I'm writing. So here S1 student object will be created. So let's take this address as 300. At 300 location,
a student object is created. So here we have suppose 12, Amit, 67. This object is there. Let's say this address is 300. Okay. Now what are we doing? We are writing c1 dot set student. We are calling this method. So when the set student method is created, it will create a memory block like this, and we are passing these two parameters. So here index value will be 3, and s is passed as s1. So here s1 is 300, so this will be 300. It will be like this. Now what are we doing? All student index is equal to s. So all student index means we are referring to this one array, right? इसमें third index पे हमने क्या डाल दिया 300, so it becomes like this. Now the job of this method is over, so it will get deleted. Everybody is okay with this part? This much you are clear? Now suppose I want to fetch the value of the particular student. So I can define another method where I am trying to get the particular student. So like we have used the set student method, on the similar lines, let me have the get student method where we are only passing the index, and its return type will be student. So here we are going to say return student. Now there is a possibility that particular object is not present there, else return, let me write here null. So just put a question mark. अच्छा ये मुझे बताना रह गया ना आपको, ये explain करती हूँ. So let me do it, otherwise I will forget only. Suppose I am writing here integer x. So what can be the possible values of x? They will be integers, right? So x is equal to 10 like this. But sometimes I want to say no, there is no value for x. Currently x value is not available. So I want to store null in x. Suppose that is my requirement. समझ में आ रहा है? अगर मेरे पास एक integer है, I've written integer x. That means I should assign some integer value. I cannot assign anything other than an integer. So if I assign a zero means it can be a valid data for me. So I want to just say no, currently the value is not available. So I want to store null. Now null is not applicable to an integer. Understood? समझ में आ रहा है? We cannot store null in an integer. So C# provides us with a provision wherein you can just put a question mark here. So this question mark, when you put, then it says now I will allow null also for an integer. Means whichever data type you take, if you want to allow null, then you have to write like this question mark. समझ गए? So the value can now be nullable as well. Understood everybody? So here that's why we are taking student question mark here, so that it will allow null value. So get student, we are passing the index. So if index is less than size, we can return the particular object that is there at that these two methods are clear everybody. Now let me go to program.cs and try and execute this one. So here I have created 3 objects. Now let's go ahead and create the object of college.
and let's specify the size as 5. Now C1 dot, when I say add student, set student, and I am passing the index as 2, and I pass S1 as a parameter, suppose. Okay, now if I write student S1, student S is equal to C1 dot, suppose we are calling here get student, and let me pass here the index 2. 2 पे तो अपने पास है ना object. So if I write S dot display method, sorry, display method. Are you all okay with this code? अभी मैंने सिंपल किया है कि अभी हमने 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए. We created the college, and then to this college we are assigning, means one by one we are storing the student objects. So S1, S2, S3 we are storing, and then we are calling get student. ये nullable है इसलिए इसको क्वेश्चन मार्क देना चाहिए. Sorry. So if S not equal to null, then only you should be able to call the display method, correct? So now let's go ahead and execute this code. You can see that particular object is being returned here. Suppose I give the index that is not valid index. So 2, 1, 4. So suppose I give here 3. So for 3, I should not be expecting any output because that will be null in this case. Or here I should just put in a message in the else part that this is null. Okay. So before we proceed, everybody is okay with this syntax? ये सबको समझ में आ रहा है ये वाला program? If you have understood, can you please type U for understood? Or else you can write R for repeat. Okay. Everybody is not typing the message. सब लोग को समझ में नहीं आया? ज्ञानेश्वर, श्रेयस, श्वेता, श्रुति, अभिजीत, वैष्णवी. क्लियर है? ठीक है. Now see what we want to do. Suppose I want to write something like this. Does that make sense to you? Instead of writing something like this, don't you think this gives more sense to us? ये समझ में आ रहा है आपको? अगर ऐसा मैं लिखना चाहूँ तो समझ में आ रहा है? That means actually what is college? It is a collection of students. So I want it to behave in this manner rather than calling it in this fashion. इसकी जगह पे मैं ये लिखना चाहती हूँ. तो क्या करना पड़ेगा? Correct. We have to define the indexer. So let's go ahead and do that. So let's go to the college part, and here we will write public. Return type will be student question mark. This. And here we will use index. समझ में आ रहा है ना सबको अभी? वो गेट सेट इसीलिए मैंने चेंज किया था, तो आपको समझ में आएगा. ठीक है? So we have to define the set part and we have to define the get part. तो सेट में ये वाला जो कोड है ये अपना आ जाएगा.
और गेट में ये वाला चाहिए. स्ट्रेट अवे आई हैव जस्ट कॉपीड इट. यहाँ पर s की जगह पे क्या लिखेंगे हम? वैल्यू लिखेंगे. पता है ना? दैट्स ऑल. आई होप नाउ यू आर क्लियर. मे बी नल हियर. पॉसिबल नल रेफरेंस. ठीक है ना? चलो. इज इट ओके ना? अभी क्लियर हो गया? इंडेक्सर का आपको डाउट आ रहा था, वो पहले गेट सेट लिखा हमने और उसको चेंज किया, एंड नाउ वी हैव यूज्ड द indexer in this case. So how to define the indexer? Public. We use this keyword to define the indexer. और ये indexer किसके ऊपर काम, मतलब क्या आप get और set करने वाले हो? So we are going to get और set the student. तो उसके data type उसका student लिया है हमने. And what are we going to pass in this scenario? We are passing an integer. तो integer को हमने pass किया इधर. तो set, अभी मैंने set define किया था, देखो वही कोड सेम टू सेम कॉपी किया इधर. और set मैंने define किया था, get और set. Is it okay everybody? So let's try to use this one rather than this one. इसको पूरा मैं कमेंट कर देती हूँ, ये नहीं चाहिए अपने. So C1 square bracket 0 is equal to S1. So here, in this case, set part will be called, and in this case, get part will be called. So let me just check. If S not equal to null, then we are writing else dot display. So Akshay is the result that we are expecting. Understood? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख दो, तो ये भरना चाहिए. Is it okay now? Indexer part is clear. ज्ञानेश्वर तुम बोल रहे थे ना? नहीं समझ में आया. Hello everybody. Is it okay? Okay. Now I will take one more topic that is a little bit important. So just okay, there is one more concept that is called as collections. Just now we used array, right? So array has got a lot of limitations. Sometimes when we create an array, we specify the size, and once that size is full, then we cannot do anything. So we need something which is more dynamic. So that is where there is a concept for the people who are from Python. We have studied data structure concept, right? List, dictionary, all those things we have studied. And in Java also you have the collection framework available. So this topic is similar to that, right? So there are a set of collections that we have, that is array list. Then we have hash table है या hash है, एक मिनट सेट करते हैं, चेक करते हैं. मैम एक डाउट था. यस बोलो वैष्णवी. यस मैम. मेरी जो सेकंड असाइनमेंट है ना मैम, तो उसमें परसेंटेज नहीं निकल रहा है. अच्छा ठीक है, तो मैं थोड़ा लास्ट में वो डिस्कस कर हाँ लेती हाँ हूँ. चलेगा. यस. सो फॉर दिस वी नीड दिस नेम स्पेस. ये जेनेरिक लिखा है ना, जेनेरिक को मैं हटा रही हूँ. Using system.collections, that is the namespace we need to use for using the collections concept. So first we will use the array list.
any name. So my list is equal to new, and you can use array list. Now the interesting part is when you say my list dot, you want to add an element, so you use add element here. Add method is here. What it is expecting? Object. So if it is object, I can store anything into it. I can store integer, I can store character, whatever. So this is similar to list concept in Python. Everybody, हम वहाँ append method use करते हैं ना. And I think in Java you have array list only, right? Java में array list है आपके पास? So all of you are aware with the concept. So just because sometimes these methods are very handy to create a group of elements. ठीक है, बहुत फटाफट काम हो जाता है अपना. So another thing is like when you create it. So I want to see what is its size. So size of my list. अभी जैसे आप C में printf लिखते हो ना, वैसे यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हो आप. कॉमा my list dot count. काउंट तो बताता है कितने एलिमेंट्स हैं, कैपेसिटी. एक मिनट, लेट मी जस्ट रिमूव दीज एलिमेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स एग्जीक्यूट दिस. मतलब अगर आपने साइज मेंशन नहीं किया तो उसकी कैपेसिटी कितनी है. So you can see right now it is showing that the capacity is 0. And there is another method called as count. Gets the number of elements actually contained in the list. तो अभी वो भी 0 आएगा क्योंकि हमने कोई भी एलिमेंट उसमें ऐड नहीं किया है. Right, everybody, count and capacity, these are the two things. Suppose I specify the array list of size 5. So 1 minute, इसको मैं यहाँ पर कैपेसिटी ले लेती हूँ. So right now there are no elements, so it is showing the count of element as 0 and the size of the array list is 5. Correct everyone? ये समझ में आया? आप या तो blank create कर सकते हो और you may specify the size. So number of elements in my list like this. अब हम उसमें add करेंगे. So my list dot, as you know, there is a method called as add. What it will do, adds an element to the end of the array list. So in Python we have append method, last में add करते जाता है ना. तो वैसा ही ये method है. So let's add 1 2 3 4 5. Okay, and after this, now let's observe the capacity and the count, both the things. So you can see now the count of element it is showing as 5 and the size of the array list is 5. What will happen if I add one more element now? So let's go ahead and add one more element. We defined the size as 5, so still we don't have to worry. We can go ahead and add one more element. Now if you go ahead and see the capacity, can you see this everyone? What it does? It doubles the capacity. उसको लगता है अरे तुमको और जरूरत है ना, तो तुम एक ही बार में सीधे डबल कर देता है वो. ठीक है. So now I can freely go ahead and add 10 more elements. जैसे 11th ऐड करोगे तो उसका कैपेसिटी 20 कर देगा वो. Understood everyone? Okay. So once we have added a set of elements, now we want to see the elements. So we can use the for each element. For each. What should I write? Object. Because it is going to return an object, right? So object O in my list. So simply if you print O, it is going to call the toString method on the my list and it will show the object output. So let's see the output now.
ठीक है, these are the elements that are present. So this is the add method. If you want to insert the element at a specific location, then we use my list dot, there is one method called as insert. So here you have to specify the position. So 0, 1, 2, 3, suppose I specify, and I want to insert maybe 90. So now if I execute, you will observe at the third index 90 will be inserted. Okay? You can observe this one. So these are the methods of inserting the elements into the array list. Now what if I want to remove? So my list dot, there is a method called as remove. So here you have to mention which element you want to remove. So directly I can say I want to remove 20. तो ये ठीक है. Let's just put it here. So 20 should be missing from the array list. Okay, so 20 is not there in the array list. What if I try to remove an element which is not present? So it doesn't do anything, right? Oh, एक मिनट ना, उसका return type कुछ है क्या, एक बार check करते हैं. It's void only, so it's not doing anything. अगर नहीं है तो कुछ नहीं करेगा वो, तो हमें पहले तो चेक करना चाहिए. मैम अगर 20 और एक बार फर्स्ट ऑकरेंस, इट इज सेइंग राइट, इट रिमूव्स द फर्स्ट ऑकरेंस. ओके, आप यहाँ पे ऐसे माउस कर्सर ले आओ, वो उसका हेल्प देता है. ठीक है, सो यू मे गेट मोर डिटेल्स अबाउट इट. माई लिस्ट डॉट, देर इज अनदर मेथड remove at. So what this remove at will do, you need to specify the index here. Specify index, कौन सा एलिमेंट रिमूव करना है, और यहाँ पर हम क्या स्पेसिफाई करते हैं, स्पेसिफाई एलिमेंट टू बी रिमूव्ड. अब इसमें इंडेक्स अगर इनवैलिड हो तो क्या होगा, कहीं पे भी एक्सेप्शन नहीं आ रहा है ना. हाँ, इट इज शोइंग एन एक्सेप्शन हियर. तो यहाँ पर अगर इनवैलिड है तो इनवैलिड इंडेक्स विल थ्रो एक्सेप्शन. गॉट इट? सो आई थिंक सो एवरीबडी अंडरस्टूड दिस array list. और बहुत सारे मेथड्स हैं, बट आई थिंक दिस शुड बी इनफ फॉर अस टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट टू इम्प्लीमेंट, राइट. अभी इसके बाद ये कौन सा था अपना, मेन 2 था ना, मेन 3. Let's go ahead now with the next collection. The next collection is, in Python we have studied dictionary collection, right everyone? So it is a collection of key and value pair. Java में क्या है, key value pair के लिए set है या hash table है? मैप करेक्ट, हैश मैप. यहाँ पे हैश टेबल है. ठीक है, हैश टेबल माय डेटा सपोज इज इक्वल टू न्यू हैश टेबल. Now we go ahead and insert the element. So my data dot add. So can you see this? We need to pass the key and the value. So let's say key is 10 and the value is some string. So we can add a set of elements here. Okay, now we want to, एक ब्रैकेट कैसे उड़ जा रहा है बार बार. Okay, so this is how we add the element.
Now my data dot, we don't have something like insert. So that means it is not an ordered collection. Or we can say we cannot access it using index. Only we can access using the key. So if you write here console dot write line, my data and square bracket 10. So pretty obvious. The output will be the corresponding value that is present at that index, that key, sorry. मेरे ख्याल से सबको क्लियर है ये पार्ट. कंसेप्ट आपको ऑलरेडी पता है ना. आई एम जस्ट शोइंग यू हाउ यू इम्प्लीमेंट इट इन C#. Now if you want to modify the value, so what you'll do is my data square bracket 10 is equal to some new values. Let's write like this. So this is how you can modify the specific value. तो अब पहले वैशाली दिखाएगा, अभी न्यू वैल्यू दिखाएगा. Okay. Now if I want to iterate through it, so how we will iterate? For each object k in my data dot, there is something called as keys. So that will return all the keys. सारे कीज हमें देखने हैं अगर, तो ये टेक्निक है. और वैल्यूज चाहिए तो डॉट वैल्यूज. Simply you leave it, it will add a blank line. So you will get a set of keys followed by a set of values. समझ रहे हो? All the keys and then all the values. And here you may see the order is little bit different. So I believe internally it is stored in the tree format. Tree के form में store होता है ये. Normal array के form में नहीं होता है. So internal arrangement is a little bit different. Understood everybody? Hash table समझ में आ गया? Next is stack and queue. So हाँ, इधर ही एक ब्रैकेट पटक से उड़ जा रहा है. This is which one? 3. So do you know what is a stack? Stack is last in first out behavior. So when we have the elements where we insert from one end and from the same end we are removing. So let's say we insert A, then B, then C, then D. So these are the elements we are inserting. When we remove, which will be removed? D, followed by C, followed by B, followed by A. जिस सीक्वेंस में आपने इंसर्ट किया है, लास्ट एलिमेंट पहले बाहर आएगा. सो लास्ट इन फर्स्ट आउट बिहेवियर इज द स्टैक. Got it? So here my stack dot push method is there. कल कोई तो पूछ रहा था ना पॉप मतलब रिमूव करते टाइम रिवर्स होगा. हाँ करेक्ट. तो ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा. अगर हमने ये सारे एलिमेंट्स डाले, so one by one we have added the set of elements. Now it's time to remove the element. एक तो एक मिनट. हाँ, for each object O in my stack
तो ये दिख रहा है आपको, उल्टा सीक्वेंस में दिखा रहा है, टॉप से नीचे जा रहा है। दिस आइटम इज नोन एज द टॉप एलिमेंट। अभी ये सबसे ऊपर है, ये रिमूव होगा पहले। सो यू सॉ द आउटपुट राइट। अब मुझे अगर रिमूव करना है तो माई स्टैक डॉट देर इज अ मेथड कॉल्ड एज पॉप. So it returns the topmost element. So you may show that element like this. ये जो सिंटैक्स है ना, ये सी के जैसा स्टाइल है, जैसे उसमें परसेंटेज डी वगैरह लिखते हैं ना हम. So the topmost element is 50. So 50 will be popped from here. Got it everybody? Stack clear है? Next is Q. ये एक एक बार करके रख लेना, ठीक है? जस्ट कभी आपको काम पड़ सकता है, बहुत सारा डेटा जब स्टोर करना है ना, सो यू माइट नीड देम, दे आर प्रीटी हैंडी. So now the next one is the Q. So my Q dot again, हाँ NQ मेथड है इधर. So Q का बिहेवियर कैसा रहेगा? Q सबको पता है रियल लाइफ में Q कैसे काम करता है. अगर आप क्यू में सबसे आगे हो तो आप ही सबसे पहले बाहर जाओगे. सो दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बिहेवियर. ओके, दैट इज अ क्यू. तो जो पहले आया है वो पहले बाहर जाएगा. So again we can have the for each object O in my queue. So this is to display the elements, and if you want to remove the element, then there is a method called as dq. dq मेथड है जो एलिमेंट को रिमूव करने के लिए यूज होता है. So 10 is the first element that we inserted. So 10 is the first one to be removed. I hope everybody is okay till this point. All right. So these were some of the data structures that are there. Now, in continuation to this, there is another concept called as generics. Now, what is this generics concept? Let's understand this. Let's take the example of this stack. ये एक stack है मेरे पास. Now, what are you going to insert into the stack? It says object data type, right? मुझे क्या insert करना है? Object insert करना है. So, I can insert integer, no problem. I can insert string, no problem. I can insert employee, no problem. I can also insert student, no problem, correct? क्योंकि object data type है, I can insert anything into the stack or any data structure that we have discussed. Yes or no, everyone? Now, when we are removing this element, what is coming out? Stack में आपने कुछ तो डाला है and you are removing. What is going to come out? It will be object. Very good. पर मुझे पता था कि मैंने तो स्टैक स्टूडेंट ही डाला था ना, सो आई कैन डू द टाइप कास्टिंग हियर. आई कैन ट्राई एंड टाइप कास्ट वट एवर ऑब्जेक्ट यू हैव रिमूव्ड. ओ को मैं स्टूडेंट में टाइप कास्ट कर सकती हूँ एंड आई कैन ट्राई स्टोर इट इन S1 because I knew it is a student. I can go ahead and typecast it into student, no problem.
बट ये भी तो हो सकता है कि मुझे ऐसा लगा कि स्टूडेंट है, पर वो स्टूडेंट नहीं था, वो तो प्रोग्रामर था। हो सकता है, गलती से भी हो सकता है ऐसा, because I blindly did the typecasting. So I am trying to typecast a programmer into student. So this is going to raise an error. हो सकता है पॉसिबल। हमेशा कैसे आपको याद रखेगा रहेगा ना आपने क्या किस सीक्वेंस में डाला था। सो व्हेन यू आर रिमूविंग द एलिमेंट यू परफॉर्म द डाउनकास्टिंग, यू माइट एंड अप डूइंग अ रॉन्ग डाउनकास्ट एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम माइट हैपन इन द एप्लीकेशन। सो इट इज डेंजरस, कैन वी से लाइक दिस, पुटिंग एनीथिंग कुछ भी अलाउड है ना, तो कुछ भी डाला हमने, सो इट इज अ लिटिल बिट डेंजरस नाउ। So what can be done in this situation? We can say, no, no, I want a stack, but I strictly want it to be of type employee. मुझे स्टैक तो बनाना है, लेकिन मुझे किस टाइप का स्टैक बनाना है, एम्प्लॉय का। सो नाउ इफ यू इंसर्ट एम्प्लॉय इट इज फाइन, बट द मोमेंट यू ट्राई टू इंसर्ट अ स्टूडेंट इट इज एन एरर। तो जब आप स्टूडेंट डाल ही नहीं सकते तो बाहर आने का सवाल ही नहीं उठता। अंडरस्टूड? Instead of having it very common for every data type, means integer is also allowed, character is also allowed, employee is also allowed, that is difficult to manage. So let's change the strategy. What we will do is we will keep it for a specific data type. So what you will do, so for that we need another namespace to be included. Generic, नाम उसका क्या है, generic, ठीक है। Now let's go ahead and implement generic concept. So now again we are going to use the array list. Array list, array list नहीं है शायद, उसका नाम ना लिस्ट है, हाँ इट्स नेम, array list का नाम लिस्ट है, ठीक है। एंड हियर यू हैव टू मेंशन द डेटा टाइप नाउ इन अ पेयर ऑफ एंगुलर ब्रैकेट। तो ये कॉन्सेप्ट अगर सी सी प्लस प्लस वाले हैं तो हमने टेम्पलेट्स में पढ़ा था, देखो। So its behavior is same as the array list, but it is the list of integers now. It's very rigid now. अभी वो integer जैसा ही behave करेगा। So all data dot, बाकी सब कुछ वही है, हाँ जो हमने देखा था, देखो add method है। So all data, sorry, अब अगर आप कुछ कुछ और डालने जाओगे तो वो एरर ही आएगा, बिकॉज नाउ इट्स टाइप इज एन इंटीजर, so this is not allowed, आएगा एरर, ठीक है। इज दैट क्लियर एवरीबडी? बाकी सब कुछ सेम है, हाँ। तो ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, behaves like array list। अभी हैश टेबल का बन गया हैश सेट, तो यहाँ पर आपको हैश सेट में 2 वैल्यू देना चाहिए ना। So here we need to mention 2 data types, one for integer, one for string, दोनों भी देना है। क्यों एरर आ रहा है? System dot collections dot using the generic type hash set t requires
वन टाइप आर्ग्यूमेंट, एक मिनट। हाँ डिक्शनरी है एक्चुअली। मैम से डुप्लीकेट वैल्यूज आर नॉट अलाउड। एक मिनट। हाँ ये है, डिक्शनरी है। हाँ सॉरी, नॉट हैश। अभी मैंने क्या लिखा था? हैश सेट लिखा था ना। हाँ हैश सेट नहीं है, वो डिक्शनरी है उसका नाम। तो पाइथन वालों के लिए इजी रहेगा डिक्शनरी याद रखना। So this is again a very vast topic, but I'm just covering the ones that you might need most of the times. ठीक है, तो आपको जब फ्री टाइम रहेगा तो आप और एक्सप्लोर कर लो। Is that okay, everyone? So this is generic equivalent for similar to hash table, ऐसा। ठीक है, सो दैट इज ऑल। मतलब आप थोड़ा सा जब फ्री टाइम रहेगा तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। सो आई जस्ट वांटेड टू गिव यू, बाद में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे लिंक, तो उसमें ये सब यूज करने वाले हैं, तो तब लगेगा, तो एक मैं हेडसअप दे के रखूंगी, एक बार प्रैक्टिस कर लेना उसको। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, नाउ इट्स टाइम। अच्छा, आज का शेड्यूल थोड़ा मैं एक बार बता देती हूँ। टुडे वी विल बी हैविंग फर्स्ट ऑफ ऑल द सेशन टिल 11:30। 11:30 को हम एक आधे घंटे का ब्रेक लेंगे, फिर 12 बजे फिर मिलते हैं। फिर जितना देर चलेगा, मतलब 1-1:30 बजे तक पढ़ाऊंगी मैं। फिर थोड़ा ब्रेक लेंगे हम, फिर टेस्ट रहेगा सेकेंड हाफ में। ओके, okay. So as I had told you yesterday that today we are going to start with SQL Server. So first let me tell you that what you will do is you go ahead and say download SQL Server. So go to the official website for SQL Server downloads. I think I did the middle one. Promises. मेरे ख्याल से मैंने ये वाला किया। हाँ ये वाला, सॉरी, दिस वन आई डाउनलोडेड। अंडरस्टूड एवरीवन? स्क्रीनशॉट रखूं क्या, याद रहेगा? Okay, this one I used. So first you download this one. Along with this, one more download is needed, that is SQL Server Management Studio. ये भी डाउनलोड करना है। ये वाला, ये दोनों चीजें डाउनलोड करो। So this is the database, means here you get the provision to create the database and everything SQL Server से, और उसको यूज करने के लिए इंटरफेस। फॉर एग्जाम्पल द पाइथन स्टूडेंट्स जिन्होंने फ्लास्क जैंगो किया था, आपको रिमेम्बर है एसक्यूलाइट डेटाबेस है, एंड वी यूज्ड क्या था वो, डीबी ब्राउजर वी यूज्ड, राइट? डीबी ब्राउजर फॉर एसक्यूलाइट, ऐसा कुछ हमने यूज किया था सॉफ्टवेयर। सो सिमिलर टू दैट वी हैव मैनेजमेंट स्टूडियो। मैनेजमेंट स्टूडियो रहेगा तो वो एक अच्छा एडिटर है जिसपे हम लोग एसक्यूएल सर्वर का कोड वगैरह लिख सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर द टू डाउनलोड्स दैट आर नीडेड। द फर्स्ट वन इज SQL Server and the second one is the Management Studio. So very simple, both are very simple software, just go ahead and download them. एक मिनट, मैं just बताती हूँ। So first you download SQL Server. SQL Server डाउनलोड करने के बाद ना, ये देखो ऐसा SQL Server इंस्टॉलेशन एक आता है ऑप्शन, उस पर अगर आप क्लिक करोगे ना,
मेंटेनेंस नहीं, इसमें नहीं। हाँ, ये दिख रहा है इंस्टॉल एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, इसको भी क्लिक करके वो उसी लिंक पे लेके जाता है। जस्ट वी डाउनलोडेड, ये दोनों चाहिए हमको। अंडरस्टूड? So you may understand SQL Server is the database part where you create the data tables, everything that is stored in the SQL Server part. And for the interface, how you will interact with that, we need the Management Studio. So a kind of good GUI interface we get to talk to the database. So we need Management Studio as well. तो आज कल संडे है ना, तो ये करके रखना, तो मंडे को कुछ प्रॉब्लम आया इंस्टॉलेशन में वगैरह, तो वो मंडे को मैं चेक करूंगी, ठीक है? Now, so now we will be starting with SQL Server Management Studio. ये दिख रहा है आपको? इंस्टॉलेशन के बाद ये ऐसा दिखेगा, इसको ओपन करो। So now you people are learning a new database. Already MySQL पढ़ चुके हो, आज SQL Server Management Studio पढ़ोगे. And I think you all know that almost all databases are 80-90% same only. तो एक डेटाबेस पढ़ा मतलब हमको आता है, ऐसे समझ के चलो, ठीक है? So you already know everything. So it will pop up with this screen, database engine and all that. Just click on connect. So I hope my screen is properly visible. ये सब दिख रहा है आपको? Options. So you may right click on this part, that is databases section दिख रहा है? So just right click on this databases, you will get the option for new database. So I can create my new database over here. So just for testing purpose I created this. तो यहाँ सिर्फ database का नाम देना है, हाँ मैंने already बना रखा है, देखो Armstrong नाम का database. Everybody can see this. Now you can right click here and click on, sorry, just expand this. You can see tables option is there. So right click, new table. ये GUI है, मतलब क्वेरी लिखे बिना आपका काम हो सकता है. So you may specify the options here. Student ID, data type is suppose integer. Like this, you may create a table. And suppose I want to make this as a primary key. So right click over here and you can see the option set primary key. ठीक है? और इसमें नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन. एवरीबडी कैन सी दिस. So is identity, just set it to yes. And then identity increment 1, identity seed is 1. So this is like auto increment option. So we are saying it will start with 1, 1, 2, 3 ऐसा. अगर आपको चाहिए तो आप 100 से भी start कर सकते हो. Seed मतलब starting point. So it will start with 100 and it will 1 by 1, 101, 102 ऐसे चलेगा. समझ में आया सबको? Now we can just press Ctrl S to save and specify the name of the table as student. मैं 2 बार ये करके दिखाऊंगी, फिर क्वेरी से भी हम करेंगे, दोनों ऑप्शन देखेंगे, ठीक है? और उसके बाद टेबल बन जाएगा अपना. स्टूडेंट टेबल है. राइट क्लिक एंड गो फॉर, कौन सा ऑप्शन है, एडिट आई थिंक सो. So here you may start inserting the values. Do not pass the value for SID, that will be auto generated.
Okay. Now right click and click on execute. So that will save all the data. ठीक है, यहाँ पे आप जाके डायरेक्टली एडिट भी कर सकते हो और किसी पर्टिकुलर रो को राइट क्लिक किया और डिलीट भी कर सकते हो. So just click on execute to make sure that the data will be saved permanently. ठीक है, एक बार और करके दिखा रही हूँ. दिस इज द वन विच इज द फास्टेस्ट ऑप्शन, राइट. अब कोडिंग के थ्रू भी हम कर सकते हैं, हमें पता है माई सीक्वल हमने पढ़ा है, सेम क्वेरी वी हैव टू टाइप हियर. बट फर्स्ट लेट मी जस्ट, दिस इज न्यू थिंग फॉर यू पीपल, राइट. तो इसलिए मैं ये वाला ऑप्शन एक बार और बता रही हूँ. राइट क्लिक, न्यू टेबल, विच एवर, पहले आपको वो स्पेसिफिकेशंस देना है. फॉर एग्जाम्पल बोलो टेबल का नाम, विच टेबल यू वांट मी टू क्रिएट. प्रोडक्ट टेबल ले लेते हैं, ठीक है. तो प्रोडक्ट आईडी ले लेते हैं, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, और क्या, कैटेगरी, कैटेगरी अलग से लेते हैं, और क्या बोलो, डिस्क्रिप्शन. ओके, नाउ कंट्रोल एस प्रेस करो सेव करने के लिए. प्रोडक्ट, ठीक है. अब जो कॉलम पे आपको कंस्ट्रेंट ऐड करना है, जैसे यहाँ पे मुझे प्राइमरी की बनाना है, तो उस पर राइट क्लिक करो, सेट प्राइमरी की ऑप्शन आएगा, एंड as I said, here you will get the identity specification option. इसको expand करो, इस identity को yes कर दो, और ये समझ गए ना अभी. Seed is from where you want it to start. So let's say I want to start it from 1 और increment 1 by 1 देना है अपने को. अब जैसे p name है, वो मुझे not null specification देना है, तो उसके लिए भी ऑप्शन है, देखो allows null, उसको no कर दो. So this will be not null option. समझ रहे हो? So you may specify the constraints from here also. ये सब होने के बाद इसको सेव करो हमेशा, कंट्रोल एस. सेविंग इज नॉट परमिटेड. हाँ, ये एक आता है कभी कभार कि हमने अगर बाद में चेंजेस किए तो वो कभी कभार ऐसा एरर देता है. उसके लिए ऑप्शन है, पहले मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ? अभी टेबल कैसे बनाया वो समझ में आया? सो फर्स्ट टाइम व्हेन आई क्रिएटेड, आफ्टर दैट आई सेव्ड इट, राइट. मैंने सेव कर दिया था. सेव करने के बाद फिर मैंने जाके कुछ चेंजेस किए. सो आफ्टर दैट इफ आई ट्राई टू सेव इट, इट इज नॉट अलाउइंग मी, इट इज शोइंग सम एरर मैसेज. कुछ तो एरर मैसेज दे रहा है, जाने दो. तो वो आपको क्या करना है, टूल्स में जाना है. टूल्स में ऑप्शंस, ऑप्शंस में आई थिंक सो वी नीड टू गो टू द डिजाइनर ऑप्शन, टेबल एंड डेटाबेस डिजाइनर. और यहाँ पे दिख रहा है आपको प्रिवेंट सेविंग चेंजेस दैट रिक्वायर टेबल रिक्रिएशन, उसको अनचेक कर दो एंड से ओके. तो अभी अपने को सेव करने देगा, ठीक है. तो ये कभी कभार इरिटेटिंग होता है, हमको चेंज करने को नहीं देता है वो. सो गो टू, क्या बोला था मैंने, टूल्स, ऑप्शंस, हियर डिजाइनर ऑप्शन इज देयर, एंड इनसाइड दिस टेबल एंड डेटाबेस डिजाइनर, और ये वाले ऑप्शन प्रिवेंट सेविंग चेंजेस को अनचेक कर दोगे. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? सो टेबल इज डन. नाउ यू वांट टू इंसर्ट सम डेटा. तो डेटा कैसे इंसर्ट करेंगे हम, प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट. हाँ, ये दिखाई नहीं दे रहा है ना, इसको राइट क्लिक करो, रिफ्रेश कर दो, तो टेबल दिखेगा. हाँ, sometimes it is not reflected here, so just right click and click on refresh, it will then be visible. So click on the product table, right click, here you will find edit option, so click on edit. You should be able to insert the items here. As I said, don't insert for product ID. So product name is suppose sugar.
Price is suppose 40 rupees. Description is sweet, whatever. Price is suppose 50. What? Jam and so on. Like this. ऐसे आप ऐड करो, राइट क्लिक करो और एग्जीक्यूट करो, तभी वो सेव होता है. हाँ, नहीं तो कभी कभार वो डेटा सेव नहीं होता है. Everybody okay till this point? So now these are so many windows that are opened. You can close them all. और देखना है तुमको डेटा तो राइट क्लिक करो और ये ऑप्शन दिख रहा है थर्ड वाला, सेलेक्ट टॉप 200,000 रोज, उसको क्लिक करो तो वो जो भी डेटा है वहां पे वो अपने को शो करेगा. यू कैन सी दिस आउटपुट. यहाँ तक क्लियर है? How to create the table, edit and all those things is okay. Now let's do it through the query. मुझे यही चीज करना है लेकिन क्वेरी के थ्रू करना है. तो कैसे करना है? यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, न्यू क्वेरी. So click on this new query and now we can go ahead and say create table, say employee. Primary key identity 1,1 ऐसे लिखते हैं. हाँ, वहां पे आप ऑटो इंक्रीमेंट लिखते हो ना माई सीक्वल में, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग है. यहाँ आइडेंटिटी 1,1 ऐसे लिखना पड़ता है. नेम varchar 20, salary float, location varchar 20. So what you'll do now, select this whole thing. ये पूरे क्वेरी को सेलेक्ट करो और F5 प्रेस कर दो. You should see this message, command completed successfully. As I said, go ahead and refresh. You should see the table that we have just now created. तो अभी देखो एम्प्लॉय टेबल आपको दिखेगा यहाँ पे. अब मुझे इसके अंदर डेटा इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट इनटू EMP, EID, ENAME, salary and location. वैल्यूज आईडी को नहीं पास करेंगे ना, सॉरी. हाँ, आईडी मत दे दो. ई नेम सिंगल कोट्स में पास करना है. ई नेम इज से अभय, सैलरी इज से 12,000, लोकेशन इज से पुणे. अंडरस्टूड एवरीबडी? ये सेम माई सीक्वल में जैसे आप इंसर्ट लिखते थे क्वेरी वैसे ही लिखना है. तो जितने रोज चाहिए आपको ऐसा. और वहां पर आपने ये भी किया होगा ना, मनोज. अब तब तुम लोग नासिक जाने वाले हो ना, तो नासिक भी लोकेशन दे देते हैं हम लोग. So now if you want to see the information, so you'll write select star from EMP. Sorry. Got it everyone? So how to create the table and how to insert the data and all those things, that is clear. ये तो हो गया इंसर्ट. मल्टीपल रिकॉर्ड्स भी इंसर्ट करना है तो आप कर सकते हो, ये सब माई सीक्वल में आपने सीखा ही है. अब व्हाट इफ आई वांट टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग. हाँ, टेबल का मुझे अगर स्ट्रक्चर देखना है तो उसके लिए है sp_help and the table name is
So just type this command exec, that is for execute. sp underscore help is like stored procedure. तो वहाँ पे एक inbuilt stored procedure है sp help and we type the name of the table. So that will give us the details of the table. दिख रहा है आपको? कॉलम नेम, उसका डेटा टाइप, जो भी चीजें हैं वो सब यहाँ पे दिखाई दे रही। नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो उसके अंदर जो जो कंस्ट्रेंट्स है वो सब दिखाई देंगे। समझ गए? So this is similar to DESC EMP। MySQL में आप ऐसे यूज करते हो। अब इसमें ना कमेंट के लिए शायद से हैश है। कमेंट सिंगल क्या है कमेंट इसमें? कमेंट के लिए क्या है? ये तो नहीं है। याद नहीं आ रहा है। रुको, ऑप्शन में क्या चेक करते हैं। Let me check. Comment in SQL Server script. डबल डैश कुछ तो ऐसे अलग सा ही है। दिस इज कमेंट। ठीक है, कुछ अलग सा ही था, याद नहीं आ रहा था। इज इट ओके एवरीवन? यहाँ तक समझ में आया सबको? DESC कमांड जो आप यूज करते हो माई सिक्वल में, वैसा कुछ आपको यहाँ चाहिए तो उसके लिए एग्जीक्यूट sp_help, दैट इज द स्टोर प्रोसीजर वी हैव टू यूज। इज इट क्लियर? Now, as I said, suppose we have created the table, right? And we want to make some changes into the table. So, which command will you use in MySQL for doing that? ये सब किस कैटेगरी में आता है? Create table and making changes into the table. It falls in which category? Correct. So we are currently discussing the DDL commands. So can you tell me what are the different DDL commands that you have studied in MySQL? Create, yes. Alter, drop, and truncate. Very good. So we just now see how to create table. Create table command clear है सबको? बस इतना ही चेंज बताया मैंने, है ना? बाकी सब कुछ सेम है, MySQL जैसा ही है। Now let's go ahead and alter the table. तो ये टेबल को मैं थोड़ा सा सामने रखती हूँ। Okay, ये ऑलरेडी एरर दे रहा है कि दिस टेबल इज ऑलरेडी प्रेजेंट। सो स्मार्ट एडिटर वी हैव, राइट? MySQL से अभी इसमें काम करने में आपको मजा आएगा। Now we want to change the table. So let's say I want to add a new record. So alter table, record बोल रहे हैं, sorry, column. Alter table EMP. What do you want to do? You want to add. What do you want to add? A new column. So let's say manager. Manager varchar 20. So just execute this. You can see command completed successfully. So now if I go ahead and so can you see this manager has been added over here? So this is to add a new column. ठीक है, कॉलम ऐड करने के लिए ऑल्टर टेबल ऐड और सीधे कॉलम का डिस्क्रिप्शन। अब जो कॉलम हमने ऐड कर दिया मैनेजर कॉलम, उसमें मैंने varchar 20 लिखा है। लेट्स से आई डोंट वांट इट टू बी varchar, मुझे वो इंटीजर टाइप में चाहिए था, मे बी।
So what I should do? I will just go ahead and here we use alter. वहां पे आप क्या यूज करते हो? माई सीक्वल में मॉडिफाई लिखते हो ना, यहाँ पे आपको ऑल्टर ही लिखना है चेंज के लिए, लाइक दिस. ऑल्टर कॉलम है क्या? ऑल्टर कॉलम मैनेजर ऐसा लिखना है, ठीक है. सो मॉडिफाई existing column. So for that we have to write like this. Got it everyone? MySQL में आप modify लिखते हो ना, उसके जगह पे यहाँ पे alter लिखना है. तो थोड़ा सा ये changes को कहीं पे नोट डाउन करके रखना. जो सेम है वो तो तुम एज इट इज लिखोगे, बट जहाँ पे डिफरेंट है वो पार्ट सिर्फ नोट डाउन करके रखोगे, ठीक है. So now if I go ahead and check out, उसको सेलेक्ट करो और F5 प्रेस करो. हाँ, तो वो दिखा देता है, मैनेजर इंटीजर दिखा रहा है आपको. Now what if I want to remove that column? So remove column. तो remove column के लिए क्या करना पड़ेगा? Drop manager. Manager is not drop column. Drop column manager. तो ये तीनों चीज समझ में आ गया सबको? नया कॉलम ऐड कैसे करना है और मॉडिफाई कैसे करना है और रिमूव कैसे करना है, ठीक है. What if I want to add multiple columns? तो यहाँ पर add और एक कॉलम कौन सा ले सकते हैं हम लोग? डेट ऑफ ज्वाइनिंग. तो उसके लिए डेट, एरर दिखा रहा है ऐसे. So there is a built-in data type in C# that is date data type, ठीक है. तो अगर आप इसको रन करोगे तो आपको दिखेगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी डेट के साथ आ गया. Understood everyone? So you can add multiple columns also within the same command. Is that clear everyone? Now this was about adding the columns and all. Now what about the constraints? ये तो समझ में आ गया आपको, टेबल बनाना कैसे और उसमें चेंजेस कैसे करना है. सो वी हैव कवर्ड क्रिएट एंड ऑल्टर. अगर कोई टेबल मुझे डिलीट करना है तो कौन सा कमांड यूज करेंगे? डिलीट टेबल अगर करना है अपने को तो कौन सा कमांड यूज करेंगे? ड्रॉप टेबल emp. So this will delete the particular table. Now if I go ahead and say select star from emp, that should raise an error saying that this table is invalid. Understood? So drop table will drop the table, the structure, the data, everything is gone. Now let's go ahead and recreate this table. Suppose मैंने टेबल को recreate किया और हमने उसमें डेटा भी insert कर दिया. So we have some data here. Now when you say select star from emp, you can see this data. Some IDs have got generated here. If I go ahead and say truncate emp, what is the meaning of truncate? Truncate table emp. So what truncate table does? It deletes all the records from the table. Internally, it actually drops the table and recreates the table. That is why it is considered as a DDL statement. वो DDL माना जाता है क्योंकि वो इंटरनली डिलीट करता है टेबल को और रिक्रिएट करता है. इसलिए अगर आप कुछ नया रिकॉर्ड इंसर्ट करते हो, if you insert a new record, it will get the ID as one only because it deleted everything, right? तो पिछला ID वाईडी सब डिलीट हो जाता है और फिर से ID रिक्रिएट होता है. Understood everyone?
Truncate is, that is why in the category of DDL. Understood everybody? ये clear है सबको? Now, then there is a concept of constraints, right? So what are the different constraints that we have? Constraints पता है सबको? What is the purpose of constraints? Constraint क्यों use करते हैं हम? We want to apply the rules, restrictions on the table, right? So yes, the constraints that we have are primary key constraint, then not null constraint, then unique key constraint, और कौन सा है? Default constraint, yes. Check, check भी है और foreign key. So let's see them. Primary key तो मैंने already बताया आपको. अगर टेबल ऑलरेडी बना हुआ है, टेबल बनाते समय प्राइमरी की कैसे डालना है वो तो समझ में आ गया. What if the table is already created and I could not give the primary key to that table, suppose? So एक मिनट. Let's say drop table. Now I created this table, but I did not mention the primary key, suppose. So let's create this table and there are no constraints to this table. अब मुझे इसमें constraint add करना है, तो कैसे करेंगे हम? Alter table emp, alter eid int primary key identity 1,1. एक मिनट. ऐसे तो ये ले रहा है, लेकिन nullable type employee ऐसे नहीं ले रहा है वो. ये देखना पड़ेगा मुझे. ऑल्टर टेबल का सिंटैक्स ये देखती हूँ मैं. 2 मिनट दे दो उसको, साइड में रखते हैं. लेट्स से वी वांट टू ऐड द कंस्ट्रेंट्स. हाँ, तो एक मिनट. पहले तो यही देख लेते हैं कि अगर टेबल बनाते समय हमें कंस्ट्रेंट्स देना है, सो दिस विल बी प्राइमरी की आइडेंटिटी 1,1. नाउ फॉर दिस वन इफ यू वांट टू गिव नॉट नल कंस्ट्रेंट, तो ऐसे दोगे आप. यूनिक कंस्ट्रेंट देना है अगर, तो इसी के आगे यूनिक दे सकते हैं हम लोग. Suppose this also I want it to be not null, like this, and here you may give default as say Pune. समझ में आ रहा है? Alter table primary, नहीं वो ठीक है, लेकिन क्या बोल रहे थे? अच्छा, ऐड नहीं लिखना है क्या? फिर आईडी आइडेंटिटी कैसे ऐड करेंगे वो चेक करो.
So this part I think everybody is understanding. We have covered primary key, not null, unique and default. ये 3-4 constraints इसमें cover होते हैं. ठीक है? Create table के समय पे. Got it everyone? Now, what is the purpose of check constraint? What is the purpose of check constraint? Let's say we want to apply check constraint on salary. We don't want that the salary should be below a specific range. मतलब इतना minimum salary तो किसी भी employee का होना ही चाहिए. Let's प्यून भी है, कोई नॉर्मल भी है, तो भी हम मिनिमम समझो 5,000 सैलरी दे रहे हैं, तो उससे नीचे सैलरी नहीं होनी चाहिए. दैट इज द कंस्ट्रेंट वी वांट टू सेट. So for that we will use the check constraint. Understood? So how to give the check constraint? Check salary greater than equal to 5,000. So this is how you can give the check constraint. Understood everyone? Now let's see how to attach the foreign key. So for foreign key, what we will do is, let's have the table department did int primary key identity 101 100 Gmail varchar 20 the location varchar 20. Already ये मैंने पहले टेस्टिंग के लिए बनाया था. So now I am going to create this department table. Now this department table has got a primary key and employee should have the department ID as a foreign key. That is our requirement. So first I need to add alter table employee add did int foreign key references department table did. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? ये सिंटैक्स सेम है आपका MySQL में भी आप ऐसे ही करते हो. दिस इज हाउ यू अटैच द फॉरेन की. I hope all of you are aware with the primary key foreign key concept. What is the purpose of foreign key? क्यों यूज करते हैं फॉरेन की? बताओ, जल्दी बताओ. Refer to prime. Yes, establish connection or relationship between two tables. So here suppose we have the department table. So department table, as I said, is department name is my suppose accounts, location is Pune and ID is 101. So there might be multiple employees which are working in 101 department. तो उनका department ID 101 101 ऐसा रहेगा, है ना? This is suppose employee ID 1 2 3 A B C. So all these employees, they are associated with the department. So to establish the relationship between two tables, so here we have the primary key. This table will be considered as a master table and this will be considered as a child table. Okay? Clear everybody? So to establish connection between two tables, we are using the primary key and foreign key relationship. Understood? Now, as we were discussing, एक मिनट मुझे चेक करना पड़ेगा. Primary key identity alter table.
इसमें आइडेंटिटी के लिए दिया नहीं है, चेक करना पड़ेगा मुझे. Okay, so let me just say drop table EMP. So here we have created a simple table like this. We want to add the constraints. So alter table EMP, add, क्या लिखा था तुमने उस समय, सीधे ऐसे ही ना, प्राइमरी की EID. ऐड नहीं लिया तो वो नहीं लेगा शायद. किसी भी तरह से वो सिंटैक्स ले नहीं रहा है. एक मिनट है. दिस इज नॉट वर्किंग. नॉट नल नहीं दिया ना तो नहीं लेगा उसको. दैट इज वन कंस्ट्रेंट इट इज एनफोर्सिंग. मतलब ये अपन बनाते समय ना मुझे लगता है नॉट नल देना मैंडेटरी है, तभी उसको हम एज अ प्राइमरी की दे सकते हैं. टेबल लेवल can does not specify column list table. अच्छा, ऐड ईआईडी. EID in employee table is specified more than once. How it is specified more than once? अच्छा. अरे यार ये बहुत इरिटेट हो रहा है. ठीक है, मैं ये बाद में बताती हूँ, थोड़ा चेक कर को. समवेयर इट इज गिविंग एरर. कुछ भी करके ले नहीं रहे. चलो बाकी नॉट नल वगैरह तो इजीली ऐड होता है. ऑल्टर टेबल EMP, ऑल्टर की नेम var 20 नॉट नल. ठीक है, ये बाकी के तो ऐड होते हैं बट वो प्राइमरी के लिए थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा. आई थिंक एवरीबडी इज ओके टिल दिस पॉइंट. All right. So only Abhijit, Shreyas and Shruti are saying proceed. What about others? Okay. So as you all know, now we will have a quick review of all the select options that we have. So select star from student.
So this is the student data. Now this part is again same as MySQL, that you may write here sname, comma, percentage from student. What if you want to concatenate the output? Then suppose we want to write like this. Yes. Suppose I want the output like this, that whatever be the name, like first let me execute this query. So here I want the output as Ajay scored 78. That is the output I want. So this is the column name. We use the plus operator to perform the concatenation. So S name plus, in single quotes we are writing scored. Now this is string, but this is float. So it is giving error that it cannot do the conversion over here. So we have to use convert to varchar. Understood everyone? Convert method use करना है. The first parameter is the data type into which you want to convert. Okay, comma, the data type which needs to be converted. So here float will be converted into string or varchar. Is this one clear everybody? And as you all know that here the column name has not been specified, so you may write here as record, something like this, single quotes. So you may see now the title of this column has been record. Okay, now I hope you all are aware with the where clause and all those things. So select star from student where, say percentage is greater than equal to 70 and the location is equal to, say, Pune. ओके ये तो पता है आपको. Suppose I want to get the list of those students who are in maybe Pune or some other location. So here we can have location as Pune or location as Mumbai. और ऐसे और भी लोकेशंस होंगे तो हम क्या लिखेंगे फिर? करेक्ट. Got it everyone? We can use in operator to specify multiple values from which we are going to select. And हो गया और हो गया not. So select star from student where location not equal to, say, Pune. And then what do you call that? Like operator होता है ना? Select star from student where S name like. Here you may specify something like this. सबको याद आ रहा है ना ये सब? किया आपने MySQL में? So this will be the names which are only of 4 characters. Then percentage something and it should end with, say, Y. Like this. और क्या है?
ठीक है, तो ये हो गया अपना लाइक ऑपरेटर। और क्या है? हाँ, सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सो सेलेक्ट location from student. Suppose we write like this. So we can get Pune coming up as twice. So we can get rid of it by writing distinct. So that will return the unique values, correct? So this distinct clause is used to remove the duplicates. और क्या है? तुम लोग के पास अगर तुम्हारा माई सीक्वल के नोट्स रहेंगे तो सामने रखो, हाँ, सो दैट आई जस्ट गो अकॉर्डिंग टू द फ्लो। और कुछ था इसमें बेसिक्स में, परसेंटेज, करेक्ट, सिलेक्ट, सो समवेयर इन बिटवीन स्मॉल ए मस्ट बी प्रेजेंट। तो ए के सामने कुछ हो सकता है, पीछे कुछ हो सकता है, सो इट इज इंक्लूडिंग दैट। नाउ सम स्ट्रिंग रिलेटेड ऑपरेशंस आर आल्सो देयर, आई थिंक सो अपर इज देयर, फ्रॉम स्टूडेंट, क्या था, स्ट्रिंग के फंक्शंस हैं, len functions there, so len will return the length of characters that are there। और भी था कैरेट, ऐसे कुछ तो है, और ये याद नहीं है मुझे, हाँ, ये बाद में देख के बताती हूँ। बट मीन सपोज यू वांट टू चेक इफ द पर्टिकुलर कैरेक्टर इज प्रेजेंट और नॉट, देन वी कैन यूज द कैरेट फंक्शन लाइक दैट। तो वो याद नहीं है, देख के बताती हूँ। But you can also explore, huh, string related functions in SQL Server. Just explore them because that are very beneficial, right? When you are having some data, you pull out the data and you want to operate on it. So these functions are very, very important at that time. Okay, so this would be the select part. And और क्या है? Next, basic select first I am trying to cover. Column name हो गया, where हो गया, like हो गया. हाँ. So select star from student, order by. What is the purpose of order by? सैलरी नहीं है क्या? तो स्टूडेंट है ना, सॉरी, परसेंटेज। So yes, the it gives the order in the ascending or descending order. So by default it is ascending. You may specify. So here if you give descending, then it is showing us descending. और इसके बाद टॉप 3 अगर हमने बोला, टॉप 100, आप माई सीक्वल में लिमिट यूज करते हो ना? हाँ, वैसा इधर टॉप मेथड है, टॉप ऑप्शन है। इसमें अभी कुछ वेरिएशन है क्या, वो मुझे एक बार चेक करने दो। आई डोंट रिमेम्बर दिस वन, नो इट इज नॉट देयर।
So top 3 is there, that will give us the top 3 record. So suppose that the requirement is give us the salary, top 3 salaries of the company. So you will get something like this. ठीक है, ये भी सही है. और कोई सा याद आ रहा है क्या? बेसिक फर्स्ट टाइम टेकिंग द बेसिक पार्ट, राइट? देन वी विल गो फॉर जॉइंट्स एंड ऑल दोस थिंग्स. यहाँ तक क्लियर है? कोई सा मिस हो रहा है क्या? एक बार चेक कर लोगे आप लोग? ठीक है, मिस होगा तो बाद में कवर करते हैं. Now, the next thing is, suppose we want to apply the aggregate functions. So select, you know, right? Sum, percentage from student. हाँ, ग्रुप वाइज के बाद आएगा. ये सब हम एक साथ रन कर सकते हैं. हाँ, तो वो लाइन से दिखा देगा एक एक आउटपुट. Okay. So these are the different aggregate functions that you have. So this aggregate function is being applied to all the records, right? Now, but there will be certain scenarios where we want to apply to a specific group. So let's see what all data we have. Select star from DPT. So DPT is empty. Let me insert some records in DPT table. और कौन सा डिपार्टमेंट लेंगे हम लोग? HR. Okay, let's say these are the departments we have. And now let's go to the employee. Employee में हमें एक और कॉलम ऐड करना है. So I will go to the design. आप यहाँ से भी कर सकते हो, है ना? डिजाइन में चले जाओ. And here you can ask DID integer and just right click here. अच्छा, वो मैंने आपको कमांड से तो बताया था, means how to do it using coding, that I have told you. Now here I have added the DID column in the employee table. Its data type is an integer. This is set to primary key. Identity is set to yes. Okay, अभी DID के ऊपर राइट क्लिक करो. And can you see this one? Relationships. Click on the relationships to create foreign key. Click on add. And now you can see this one, tables and column specification. उस पर क्लिक करोगे तो रिलेशनशिप टेबल नेम, तो वो रिलेशनशिप का नाम है. प्राइमरी की टेबल इज डिपार्टमेंट और उसका कॉलम कौन सा है? डिपार्टमेंट आईडी. और फॉरेन की का कॉलम नेम भी डिपार्टमेंट आईडी है. समझ में आ रहा है? क्लिक ऑन. आई एम रिपीटिंग इट. लेट मी जस्ट डिलीट दिस कॉलम. फिर से मैं कर रही हूँ. हाँ, देखो DID integer. Now right click over here, go to relationships, add tables and column specification option is there. यहाँ पे आपको प्राइमरी टेबल, प्राइमरी जो होगा वो डिपार्टमेंट है ना, उसका कॉलम है डिपार्टमेंट आईडी एम्प्लॉय, एंड दिस इज आल्सो डिपार्टमेंट आईडी.
Understood? Everybody? Now save this. Now let me add data. So employee ID I won't enter. Location is Pune. Department ID 100 से है ना? So let's add it as 100. Suraj Pune 100. Seema Pune 100. Suresh Chennai 101. और कौन है? अक्षय अब कौन है? रूपल और इसका लोकेशन और क्या लोकेशन लिया है मैंने? चेन्नई पुणे मुंबई 102. और कौन है? नाम श्रुति 103 है ना अपने पास? 103 104 तक है ना? तो अब नाम आ गया और किसका? अमित मुंबई 103. रोहित चेन्नई 102. और कौन है? मनीष ठीक है. और लास्ट एक और रिकॉर्ड ऐड करती हूँ. दैट इज सुरेश Chennai, but department has not been added. So that part I am still going to take as null. So these are a couple of records we have added. Now we would apply the group by concept here. अरे मैंने वो इतना सारा सेलेक्ट लिखा तो गलती से बंद तो नहीं कर दिया. इसको बंद करते हैं. इसको बंद किया. I have it ना. Now we are going for group by. Okay, so we will say select. Now when you are applying group by, you have to specify the column on which you have to apply the group by. So we will be applying group by on department ID, and on that group what operation you are going to perform. So let's say I want to perform the sum operation, maybe sum of salary from क्या था? Employee group by DID. So now you can see here, there is one department which is null also, right? So for null, it is showing the summation like this. There is only one employee, right? And for all others, it is showing like this. Now you might also go ahead and say like this. कितने हैं वो भी पता करने हैं अपने को. Max, minimum सब कुछ मिलेगा है ना.
So this is telling us the count. This is telling us in that group what is the maximum salary. Everybody okay with this part? Group by पता है ना सबको, concept wise everyone is aware. Yes, so same syntax, right? What you used in MySQL, that is the same syntax we have to use here. Now, suppose I delete the salary, was not valid. 0 तो valid data ही है. एक मिनट. Let's use the insert statement in this case. Insert into we are going to apply the values for EID, ename and location. Let's say I am going to skip the salary part. Values. अच्छा EID भी अपने को देना नहीं है ना, that is auto increment. So the name of the employee is say Manoj and the location is say Pune. So now if I write here select star from EMP, then you will observe that for Manoj, the salary part has been entered as null, correct? अब इस null को लेकर अगर हम कुछ भी calculation करने जाएंगे, for example, I want to count how many salaries. Now, if you observe from here, how many records are there total? आपको दिख रहा है यहाँ पे total 13 records है ना? So if I write here select count star from EMP, you will observe that the count is coming up as 13. But right now, let's say I specify the salary. So can you see this? It is counting how many? 12. Null को वो count नहीं कर रहा है. So for handling that, वैसे ही अगर हम लोग sum या average निकालना है मुझे. For example, if I want to get the average of salary. So when I say average, it is going to divide by 12, not by 13. Employees कितने अपने पास? Total how many employees we have? 13 employees. So actually when you calculate the average, it should divide by 13, not 12. Understood? समझ में आ रहा है? Null की वजह से वो problem आएगा. So how we handle the null values? So select salary from EMP. So here it is showing this part as null. So we can use NVL function. क्या है इसका? One minute. NVL SQL server. If null is the method. If null, then take it as 0. Why it is showing error? Is not recognized. Ma'am, that is for MySQL. अच्छा, SQL server में is null है. Okay. So now can you see this? That if there is a null value, it will be replaced with a 0. ये भी थोड़ा सा important है, हाँ. बहुत बार अपने को लगता है कि when you are building an application, because of that null value, the calculation may vary. तो वो हमको नहीं चाहिए अगर. So just use the is null function and replace that null with some other value, whatever you want. तो समझो मुझे यहाँ पर 1000 रखना है.
तो 1000 आप रख दो, ठीक है। सो दैट नल वैल्यू विल बी रिप्लेस्ड विथ 1000। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? सो लेट मी राइट रिप्लेस null value with specified value. Okay, so similarly when we were doing with the average part, right, तो average में भी आप ये चीज apply करो. So is null and specify this as 0 and then you apply the thing. देखो पहले आंसर अलग आ रहा था मैम, एक्चुअल टेबल में चेंजेस नो नो नो. whenever you are writing select you are only fetching the data shreds. जब तक आप अपडेट नहीं लिखोगे मॉडिफाई नहीं होगा डेटा. Is that clear everybody? So I hope you understand that. देखो ये पहला जो आंसर आया था वो और अब में फर्क है. हाँ, यहाँ पर हम लोग इजनल अगर हटा दें, देखो आपको आंसर सामने है ना, 26 समथिंग आ रहा है आंसर और ये 28 समथिंग आ रहा है. सो देयर इज अ डिफरेंस इन द आंसर, राइट. सो व्हेन यू डील विद नल वैल्यूज दैट विल चेंज द सिनेरियो. सो दैट इज समटाइम्स वेरी इंपॉर्टेंट. थोड़ा सा कभी कभार इसकी जरूरत पड़ती है. क्लियर है? सो ग्रुप बाय एवरीबॉडी इज ओके? Okay, now when we are applying the group by methods, ग्रुप बाय किया कि नहीं मैंने? हाँ ग्रुप बाय किया था ना. तो ग्रुप बाय को फिर से लेते हैं. Now when we are applying the group by, let's say I want to filter out some of the groups. कुछ groups मुझे नहीं चाहिए. For example जिनका sum of salary 50,000 से कम है वो groups मुझे नहीं चाहिए. So we want to filter out the groups. ग्रुप्स को अगर फिल्टर आउट करना है उस समय हम हैविंग क्लॉज यूज करते हैं. सो हैविंग सम सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000. सिर्फ यही मुझे चाहिए. सो प्लीज रिमेंबर वेयर क्लॉज इज यूज टू फिल्टर रोज, बट if you want to filter groups you have to use the having clause. ठीक है, याद रहेगा. बहुत लोगों को मॉक इंटरव्यू में मैंने ये पूछा तो याद नहीं आंसर आ रहा था. अभी याद रहेगा? और इसमें भी फिर ऑर्डर बाय वो सब तो चलेगा ही. सो ऑर्डर बाय सम सैलरी. सो यू कैन सी दैट. नहीं हुआ क्या? हाँ हुआ ना. सॉरी डिसेंडिंग लिखना चाहिए था. माय एक्सपेक्टेशन वाज डिफरेंट. ओके अंडरस्टूड. तो उस पे भी आप ऑर्डर बाय भी लगा सकते हो. ग्रुप बाय किया, हैविंग किया, फिर आप ऑर्डर बाय भी कर सकते हो. आई होप टिल दिस पॉइंट एवरीबॉडी इज ओके. Next comes the concept of subqueries. So when we have a query within a query, that is called as a subquery. So let's say I want to see the list of those employees. एक minute, huh? Select star from EMP. So let's say I want to see the list of those employees whose salary is more than Rupal's salary. Suppose that is the requirement. Okay. So first of all, I need to know what is the salary of Rupal. So here I will say select salary from employee where e name is equal to Rupal. So this will give us the salary of Rupal. अब मुझे वो एम्प्लॉयज चाहिए जिनकी सैलरी रूपल की सैलरी से ज्यादा है. तो क्या लिखेंगे हम? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर
salary is greater than, and this is the subquery. ठीक है? I hope you all are aware of it. So we get the list of those employees whose salary will be greater than Rupal's salary. Got it? Everybody is understanding or it is overflowing? नीचे गिर तो नहीं जा रहा है जो जो हम पढ़ रहे हैं? अभी समझ में आ रहा है सबको? Yes. So suppose I want to see the list of those employees who are working in which department? 1 minute. Huh? So I want to see the list of those employees who are working in finance department. So what is the query we need to write? Tell me. Yes. What should I write? पढ़ा है ना सबने सब क्वेरी? Have you studied subquery in MySQL? Hello. Am I audible? Have you studied subquery in MySQL? Select star from employee where. Select star from EMP where DID in. Select DID from department where D name is finance. Correct. आप इन की जगह इक्वल भी लगा सकते हो, है ना श्रेयस? क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट रहेगा जिसका नाम फाइनेंस रहेगा. Yes, what about others? मनोज, संजू, श्वेता, श्रुति. क्या करना है? क्वेश्चन क्या है? द नेम ऑफ द डिपार्टमेंट इज गिवन एज फाइनेंस. तो कौन से टेबल में देखना है फाइनेंस टेबल को? वेयर इट इज प्रेजेंट इंफॉर्मेशन? डिपार्टमेंट टेबल, है ना? तो क्या करोगे आप? सिलेक्ट DID from department where D name is equal to finance, right? This will give us the department ID of finance table. अब हमें क्या करना है? Select star from EMP where DID is equal to. Like this. Got it? So 101 के सारे एम्प्लॉइज आपको दिखेंगे. Understood everybody? Suppose I want to have a query like this. Give the list of employees whose salary is more than the highest salary of testing department.
Read the question carefully, everybody, and try to solve this question. Give the list of employees whose salary is more than the highest salary of testing department. क्या दिया हुआ है? What is given first of all? क्या दिया हुआ है? What is given in the question? मतलब डेटा जो अपने को दिया हुआ है वो क्या है? मुझे लग रहा है ओवरलोडिंग हो रहा है क्या? ऑपरेटर ओवरलोडिंग? इज इट ऑपरेटर ओवरलोडिंग नाउ? Select star from EMP where salary is equal to select max salary from department where department max salary department table में है क्या दानेश्वर? You've written max salary from department. हाँ. So what is given is the testing department is given, right? So first what you will do, जैसे अभी हमने किया था ये वाला, इससे हमें पहले आईडी निकालना है. So this is testing. अब जो तुमने लिखा है ज्ञानेश्वर, select max salary from EMP where DID is equal to this one. इससे मुझे मैक्स सैलरी मिलेगा उस डिपार्टमेंट का. ठीक है. सो दिस बिकम्स ऐसे क्वेरी विद इन अ सब क्वेरी एंड देन वी विल राइट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP where salary greater than this whole thing. So this subquery, अरे कुछ भी नहीं आया, किसी का नहीं है क्या? Wait a minute. वन जीरो थ्री का देखना पड़ेगा. Select star from EMP. $28,000 and 43,000. तो एक्चुअली 43,000 ही सबसे ज्यादा सैलरी हो रही है, तो जाने दो. और कौन सा है? वी कैन टेक 100 किसका है? अकाउंट्स. सो लेट्स चेंज इट टू अकाउंट्स टू गेट सम डेटा. बहुत लोग हैं जिनका अकाउंट सैलरी से ज्यादा. एम्प्लॉइज विल सेलेक्ट माय सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय DID. हाँ करेक्ट है. अंडरस्टूड एवरीवन? इस क्वेश्चन को ब्रेक करना है. सबसे पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करोगे. इससे क्या मिलेगा तुमको? उस डिपार्टमेंट का आईडी मिलेगा. वो आईडी लेकर आप उसके उस आईडी के मैक्स सैलरी निकालोगे और फिर बाकी एम्प्लॉय जिनकी सैलरी उस मैक्स सैलरी से ज्यादा है. इज दैट ओके? So subquery part is okay. Next is the joins concept. आगे बढ़ो. एकदम थोड़े धीरे धीरे सन्नाटा छाते जा रहा है. कोई चक्कर खा खा के गिर तो नहीं जा रहा है? ऐसे बहुत सारा चीज एक दिन में पढ़ रहे हैं हम लोग. But I already asked you to revise the MySQL concept, right? First we are learning SQL Server, then we will implement it in C#. We'll see how to pull out the data in C# using SQL Server.
So can you please tell me everyone, what is the status? Can I see? What is the status everyone? कौन सा है? सब ओके मनोज? सब बढ़िया है संजू is saying. All good? ठीक है. So is it okay if I continue with joins concept? Yes. So what is the purpose of joins? We used the primary key and foreign key. We said it is used to establish relationship between the two tables. So when the data is present in two multiple tables, then we want to merge them, or we want to join them and extract the information. Like in this scenario, we have the employee table and we have the department table. So department information is in department table, employee information is in employee table. We want to merge these two and extract the information. That is our requirement. Okay. So for that we are using the joins concept. What are the different types of joins you are aware of? कौन से joins आपको पता है बताओ? You know inner join? Yes. Cartesian join भी है एक. चलो inner join, outer join. Outer join, in outer join you have the categories like left, right, full, outer join. Then you have equi join, inner join एक ही होता है. और कौन सा सेल्फ जॉइन? यस, वी कैन अप, वो भी इनर जॉइन का ही पार्ट है, बट इफ द टेबल सेम टेबल पे जॉइन लगाएंगे तो सेल्फ जॉइन कहलाता है. वी हैव कार्टेशियन जॉइन. Okay, so these are the different types of joins we have. So let's see them one by one. So the most simplest way of applying the joins is, so suppose I write select star from dpt comma emp. अगर ऐसा हमने लगाया तो इसमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स नहीं दिखाता है क्या? अच्छा, हाँ 65 रोज दिखा रहा है. So it simply multiplies the first table records with the second one. So that is where we get the combined output. So this type of join is known as Cartesian join. Okay, so we call this as unconditional conditional join. Is it okay? कोई कंडीशन नहीं है, डायरेक्टली हमने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डीपीटी कॉमा एम्प्लॉय लिख दिया. दोनों टेबल का डेटा पूरा एक टेबल का पूरा पूरा दूसरे टेबल से मल्टीप्लाई होकर आउटपुट आएगा. दैट इज द अनकंडीशनल जॉइन. नेक्स्ट कम्स इनर जॉइन. इनर जॉइन में हम क्या करते हैं? लेट मी हैव सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डीपीटी ऑर्डर बाय डीआई. सेलेक्ट डी नेम comma d location comma did. थोड़ा ब्लरी हो रहा है लेकिन हाँ क्या हो गया? हेलो खाना खाती.
ठीक है, दिख तो रहा है आपको डेटा ना? एवरीबडी इज एबल टू सी द डेटा. I purposely used this type of output so that we can understand ये 100 किससे कंबाइन होगा, इससे कंबाइन होगा. ठीक है ना, ऐसा 101 ऐसा जाएगा. Then we will have 102, 103 and then 104. This is called as equijoin. So basically what are we saying कि डिपार्टमेंट टेबल है, जो डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट आईडी and in the employee table here we are using the department id. It is being compared with employee table department id. समझ में आ रहा है? ये दोनों को हम अगर इक्वल है तो वो रिकॉर्ड्स को हम पिक कर रहे हैं, और जैसे ये रिकॉर्ड है उसका मैचिंग यहाँ कुछ नहीं है तो इसको नहीं पिक करेगा. ठीक है, गॉट इट एवरीवन? सो सिंपल. अगर मुझे जॉइंस का कॉन्सेप्ट नहीं भी पता है और अगर मुझे ये लिखना है, देन हाउ वी विल राइट इट? सेलेक्ट. नाउ यू डिसाइड विच कॉलम्स यू वांट. सो आई वांट सपोज डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम and salary. This much information I want. Now DID is something which is present in both the tables. So from EMP comma DEPT. So what we generally do is we use some alias name. कुछ उसको एक अलग नाम देते हैं, like this, where E dot department ID is equal to D dot department ID. That is the condition we are specifying. अब ये DID को एरर दे रहा है क्योंकि ये पूछ रहा है कौन से टेबल से लो, तो उसको हम ऐसा बोल सकते हैं. So whenever you use the alias name, it is always beneficial because it improves the performance of the query. Okay. So now when we execute this, can you see the output here? ये सब एम्प्लॉयज हैं जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं. देखो कौन कौन से, अजय, सूरज, सीमा. दिख रहा है आपको? अजय, सूरज, सीमा, है ना? वही रिकॉर्ड है. सो दिस इज द वेरी रॉ फॉर्मेट ऑफ द क्वेरी. ठीक है, अगर मुझे जॉइंस का पता नहीं है बिल्ट इन क्या है ऑप्शन, so this is how you will write the query. Is it clear? But if you want to apply inner join, then what you will do? Select same as MySQL. ठीक है, everybody is okay with this? इनर जॉइन समझ में आ गया सबको? याद आ गया? Then we have the outer join concept, right? So what is the outer join concept? तो inner join की जगह पर आप यहाँ पर लिखोगे left outer join. So that will give you the left outer join. What is left outer join? First of all, we will get the matching records plus the non-matching records from the left table. Which one is the left table? When you are writing this, ये आपने लेफ्ट में लिखा है ना, तो ये लेफ्ट बनेगा और ये राइट हो जाएगा. That's how you use them in your query. अगर आपने DPT पहले लिखा, एम्प्लॉय बाद में लिखोगे तो DPT लेफ्ट कहलाएगा. Similarly, we may have the right outer. Sorry. Similarly, we may have the right outer join. So लेफ्ट की जगह पर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? राइट आउटर जॉइन. तो राइट में मेरे पास एक्चुअली है नहीं कुछ डेटा. So in the department table, actually I should add some record. Quality, say Delhi. So now you can see it is a right outer join. So from the department table, additional record has been added here. And finally, we have the full outer join. Now full outer join is not in MySQL, but here it is there. ठीक है, तो हम यहाँ पर full outer join लिख सकते हैं.
Okay, so you may see the data from the left table and the data from the right table plus the matching records. वो सब आ जाएगा. That is the full outer join. Understood everybody? Now what is the self join? We will move ahead with the self join. ये ठीक है, सबको clear है यहाँ तक? Okay, so now to implement self join, I will have to make some changes in our employee table. What I'll do is I'll add another column, that is a manager column, integer, and this has to be the foreign key. So as I said, go to relationships, add table specification. Now primary key is the employee table, employee ID. Foreign key table is also employee table, but the column that is going to be referred is the manager. समझ में आ रहा है? एक अपडेट करना पड़ेगा तभी होगा, दिखेगा नहीं. Update EMP. मैनेजर लिखा है शायद ना मैंने. अननोन कॉलम मैनेजर क्यों ऐड नहीं हुआ? सॉरी, सेव नहीं किया मैंने. I need to save it, then only it will be there. Energy, yeah. So now if I write here edit में ऑप्शन, अब वो कॉलम दिखेगा, नहीं तो वो दिखता नहीं है कभी कभी. एटलीस्ट एक रिकॉर्ड आप ऐड करो, फिर वो कॉलम दिखेगा तो आप एडिट कर सकते हो. सो लेट्स से अजय मैनेजर इज, इसको अपन डाल देते हैं, किसको लेंगे मैनेजर, समझो अक्षय इज द मैनेजर. तो अक्षय का डिपार्टमेंट आईडी 100 है ना. तो यहाँ पर मान लीजिए सीमा इज द मैनेजर, तो मतलब 3. तो इधर 3 लिखा हमने, इधर 3 लिखा. ठीक है. सो सीमा हर सेल्फ इज द मैनेजर, सो हर मैनेजर आईडी कॉलम विल बी नल. अब ये वाले देखो 101 में से हमने पकड़ा अक्षय को, मान लीजिए, तो अक्षय 5 है ना, तो यहाँ पर 5 आएगा और यहाँ पर 5 आएगा. नाउ लेट्स गो टू 102. तो 102 में रूपल है और रोहित है, तो रूपल का मैनेजर रोहित है यदि, तो यहाँ पर 10 आएगा. नाउ कमिंग टू 103. तो 103 में अमित इज द मैनेजर फॉर श्रुति, तो यहाँ पर 9 आएगा, सॉरी 9 आएगा, और अमित हिमसेल्फ इज द मैनेजर. 104 खुद मैनेजर है और बाकी इनका मैनेजर कोई नहीं है. लेट इट बी लाइक, सो विल से एग्जीक्यूट. Understood everyone? This is the data we have. So now see what I'm going to write. Select EID, comma, ename, comma, manager from EMP. This is our employee table. Now let me have
the same output again, but this, let's call this as a manager table. मतलब इस टेबल में मेरे पास क्या है, एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन है, और इस टेबल में मान लीजिए अपने पास मैनेजर की इंफॉर्मेशन है, ठीक है. सो नाउ लुक हियर, इफ यू वांट टू फाइंड आउट हु इज द मैनेजर ऑफ, व्हाट इज द नेम ऑफ अजय's मैनेजर, तो अजय का मैनेजर आईडी कितना है, 3. तो 3 को लेकर आप इस टेबल में जाओ, तो आपको पता चलता है ना कि उसका मैनेजर का नाम सीमा है. सिमिलरली हियर आल्सो यू विल गेट इट एज 3. नाउ वी अंडरस्टूड एवरीवन. यहाँ पे 5, तो सुरेश के मैनेजर अक्षय हैं, है ना, और अमृता का भी मैनेजर अक्षय है. तो इसका मैनेजर 10, 10 मतलब कौन है, रोहित. और 9, 9 is like Amit and so on. ठीक है, everybody is okay with this. So I want to display the name of the employees along with the name of their managers. कि मुझे ऐसा चाहिए, मे बी आउटपुट सीमा मैनेजेस अजय, या अजय इज मैनेज्ड बाय सीमा, ऐसा आउटपुट मुझे चाहिए. So we are going to apply the join but within the same table. So on one table we have the primary key and the other table we have the foreign key. Is it okay everyone? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, फिर हम ज्वाइन लिखेंगे. Hello everyone, are you okay with the concept? So as I said, we will name this table as E, we will name this table as M. So what do we want? E से मुझे क्या चाहिए, एम्प्लॉय का नाम चाहिए. So from, so select E dot E name, कॉमा M dot E name, दोनों में से नाम ही चाहिए, तो दोनों में से नाम ले लिया. From employee table E inner join एम्प्लॉय टेबल M, वही टेबल है लेकिन एक बार उसका नाम हमने E लिखा, एक बार उसका नाम हमने M लिखा. ठीक है, अब क्या करेंगे, ऑन E डॉट, देखो कौन सा कॉलम, E में से कौन सा कॉलम ले रही हूं मैं, ध्यान से देखो. फ्रॉम द E टेबल विच कॉलम वी हैव टू पिक अप, एरो बनाया मैंने, देखो. मैनेजर, क्या हो गया इतना धीरे आंसर आया. इज इक्वल टू किससे मैच हो रहा है, किससे मैच किया उसको, EID से. तो किसका EID, M डॉट EID, दैट इज हाउ यू विल बी राइटिंग द क्वेरी. गॉट इट? ये समझ में नहीं आ रहा है क्या, ये जो टेबल है, व्हाट हैपेंड, व्हाई आंसर इज नॉट कमिंग. ये टेबल है, इसका नाम क्या है, एम्प्लॉय. ये जो टेबल है इसका नाम क्या है, मैनेजर. तो देखो एरो कैसे बनाया मैंने, ये वाले टेबल में से मैनेजर कॉलम को जोड़ा है किसके साथ, एम्प्लॉय आईडी के साथ. समझ रहे हो? सो दिस टेबल नेम इज E. तो एम्प्लॉय E लिखा ना मैंने, यहाँ पे एम्प्लॉय एज E एंड एम्प्लॉय एज M. एक टेबल का नाम E है, दूसरे टेबल का नाम M है. तो ये वाले टेबल को अगर हमने देखा तो E डॉट मैनेजर लिखना पड़ेगा ना, इस कॉलम को रेफर किया, तो E डॉट मैनेजर इज इक्वल टू, ये टेबल में आ जाओ. इस टेबल में हमने क्या किया, M का कौन सा, EID, तो M डॉट EID से मैच करेंगे. इज दैट फाइन? So let's go ahead and experiment with it. So select E name, comma, sorry, E dot E name
comma m dot ename from emp e inner join emp m on e dot manager is equal to m dot eid. So you may see here Ajay Seema's वही आउटपुट आ रहा है अजय सीमा सूरज सीमा. ठीक है सूरज सीमा ये सही आ रहा है. एंड एज आई सेड नेक्स्ट इज द स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन पार्ट. तो अगर तुमको स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन करना है तो तुमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा मैनेज्ड बाय. जस्ट यूज प्लस. So Ajay is managed by Seema, Suraj is managed by Seema. Like this, you will get the output. तो मैनेजर को हर जगह एरर क्यों दे रहा है? शायद वो अपडेट नहीं हुआ इसलिए. बट इट इज फाइन राइट. कभी कभार एरर आएगा इसको इग्नोर करना वो रन हो जाएगा क्वेरी. वी हैव ऑफिशियली एडेड इट राइट. कॉलम्स में है अपने पास मैनेजर. सो आई होप एवरीबॉडी इज ओके टिल दिस पॉइंट. जॉइन समझ में आ गया? Yes, please confirm everybody. You can see my screen. Okay, so here you need to create a class hierarchy. So the parent class that you have to create is the account class with the data members as account number, account name, balance. Okay, and then there is a static data member that is ISBN number. Then we have rate of interest that is static. So I hope you all know that whenever we are opening an account in the bank, RBI is fixing up the rate of interest for all the banks, right? कुछ तो एक interest है जो RBI fix करती है. So that is this rate of interest that is also static because all the banks and everybody is going to follow this rate of interest. Then on this class you need to have the default parameterized constructor display accept method. Then you have to create one method, abstract method, that is calculate balance. And also you need to override the toString method. This is the account class. Everybody please tell me account class समझ में आया सबको? All right, now moving ahead. Then you have to create another class that is savings account, which is inherited from the account class. Now here you need to add another data member that is saving interest. See, whenever we go to the bank says हम आपको इतना interest देंगे. So what is that interest? जो RBI दे रही है उसमें वो लोग कुछ तो प्लस करेंगे ना. Means otherwise why should I prefer one bank over another? So there is some competition, right? तो RBI ने बोला है कम से कम इतना तो आपको देना ही है. For example, let's say RBI is giving 2% interest. So the bank में से हम आपको 3% देंगे. आप हमारे पास अकाउंट खोलिए. समझ में आ रहा है? So if at all you are having the savings account, you will be having some savings interest. So some calculation you will do. मतलब आपको क्या करना है? जो rate of interest RBI दे रही है उसमें कुछ तो plus minus करोगे आप. And that will be the saving interest for the savings account. Understood? Now for this class you will have default constructor parameterized. You need to override. ये सब override में आएगा. हाँ ये मैंने लिखा नहीं. Display also you will override. Accept also you will override. हाँ यहाँ मैं भूल गई लिखना. Okay everybody? थर्ड और फोर्थ भी ओवरराइड होगा. आरबीआई प्लस सेविंग्स इंटरेस्ट विल बी यस करेक्ट. नहीं प्लस सेविंग्स इंटरेस्ट नहीं. सेविंग्स इंटरेस्ट इज इक्वल टू आरबीआई प्लस समथिंग. ओके श्रुति. आरबीआई का जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा फॉर एग्जांपल 2 तो 2 प्लस तुम कुछ भी ले लो ना. 1 ले लो 2 ले लो 3 ले लो तुम्हारी मर्जी. दैट विल बी द सेविंग्स इंटरेस्ट फॉर द सेविंग्स अकाउंट. अंडरस्टूड श्रुति?
See, what I'm saying is every bank is governed by RBI. Okay. Now RBI is saying that you should provide minimum 2% interest, for example. So that 2% is this one, rate of interest. Got it, Shreyas? ये पॉइंट समझ में आया? ये आरबीआई दे रहा है, इसलिए उसको स्टैटिक रखा है हमने. नाउ कमिंग टू द चाइल्ड क्लास, दैट इज सेविंग्स अकाउंट क्लास. सो सेविंग्स अकाउंट इज मीन्स सपोज आई एम फ्रॉम एक्सिस बैंक. तो मेरा बैंक किसी और बैंक से ज्यादा अच्छा क्यों है? तो वो 2% नहीं दे रहा है, वो 2.5% इंटरेस्ट दे रहा है या 3% इंटरेस्ट दे रहा है. अंडरस्टूड? So the savings interest that the bank is providing is equal to interest provided by RBI plus something. That something you can decide. वो 1, 2, 3 कुछ भी ले लो आप. That is fine. Is it clear? Everybody understood? ये सेविंग्स अकाउंट वाला क्लास समझ में आया सबको? हाँ, यहाँ पर मेन पार्ट है ओवरराइड कैलकुलेट बैलेंस. अब कैलकुलेट बैलेंस हम पेरेंट क्लास में नहीं कर सकते, लेकिन चाइल्ड क्लास में कर सकते हैं. कैसे करना है? जो आपके अकाउंट में बैलेंस होगा, फॉर एग्जाम्पल 5000, तो 5000 प्लस इंटरेस्ट इज दैट एक्चुअल बैलेंस दैट आई शुड हैव. करेक्ट? जो भी इंटरेस्ट तुम्हारा सेविंग्स इंटरेस्ट आएगा ना, वो इस ओवरऑल बैलेंस में प्लस करना है. किसमें? ये बैलेंस जो हमने लिया उसमें प्लस करेंगे तो एक्चुअल बैलेंस आएगा फॉर दैट पर्टिकुलर अकाउंट. गॉट इट एवरीवन? नाउ द नेक्स्ट क्लास दैट यू नीड टू क्रिएट इज करंट अकाउंट. सो करंट अकाउंट इज मोस्टली फॉर द बिजनेस पर्पसेस. यहाँ पर जीरो बैलेंस रखने का भी अलाउड रहता है. ठीक है? सो बट इफ यू आर मेंटेनिंग जीरो बैलेंस एंड ऑल, देन सम चार्जेस विल बी देयर. सो देर विल बी सम चार्जेस एप्लीकेबल ऑन दिस अकाउंट. हमें कुछ पे करना होता है बैंक को फॉर ओपनिंग दिस टाइप ऑफ अकाउंट. सो दैट दिस, ये जो करंट चार्ज है ना, दैट यू मे टेक इक्वल टू दिस पार्ट. दैट इज फाइन. कुछ तो लॉजिक लगाना है, तो आप इसको इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लो. दैट इज ऑल्सो फाइन. अंडरस्टूड? तो ये जो चार्जेस रहेगा ना, वो हमारे बैलेंस से माइनस होगा. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. सेविंग्स इंटरेस्ट, सेविंग्स में हमको प्लस होता है और करंट में माइनस होगा. वी हैव टू पे समथिंग टू द बैंक फॉर ओपनिंग द करंट अकाउंट, so that you can take directly equal to the rate of interest that you have taken. Understood everybody? I am repeating, please listen. The current account is another special type of account which is mostly used for business purposes. तो उसमें कुछ लिमिट नहीं रहता है, कितना भी आप प्लस कर सकते हो, कितना भी माइनस कर सकते हो, जीरो बैलेंस भी रख सकते हो. अगर ये फैसिलिटी आपको चाहिए तो आपको बैंक को कुछ पैसे देने होते हैं. सो दैट अमाउंट इज करंट चार्जेस. अंडरस्टूड? तो वो 2%, 3% कुछ तो रहेगा. सो व्हाट यू विल डू इज करंट चार्जेस इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो यहाँ पे अपन ने शुरू में लिया था, वो ऐसा ले लो आप. सो इफ इट इज 2%, दिस विल ऑल्सो बिकम 2%. इज दैट क्लियर? पर ये 2% बैलेंस में प्लस नहीं होगा, माइनस होगा. सो इफ माई बैलेंस इज 5000 minus 10% of 5000, so that will be 4500. that will be my balance. Okay? क्योंकि वो बैंक ले लेगी उतना पैसा. यहां तक सबको समझ में आ गया क्या? थर्ड क्वेश्चन तक? मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्रिएट अ क्लास बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट नाम का क्लास बनेगा अभी, जिसके अंदर हमें एरे ऑफ अकाउंट्स लेना है, जैसे अपन ने एम्प्लॉय का एरे बनाया था वैसा. And again, parameterize constructor for size. For example, you create a bank account for 5, तो 5 accounts रहेंगे उसमें. Display all accounts. Add account एक मेथड बनाना है, तो एक अकाउंट ऑब्जेक्ट ऐड होगा. लेकिन अकाउंट ऑब्जेक्ट मतलब, so when adding an account you should ask whether it is a savings account or current account. So in the same array there may be some accounts which are savings accounts, some may be current account. So you have to implement this.